बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनायतुल्लाह है। मैं इस प्रोग्राम में आया हुआ हूँ। मैं ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम हर जगह होना चाहिए। अब हमारी कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। बच्चे लीड कर रहे हैं। अब उनके अंदर शौक और पैदा करना है। हम लोगों को ड्रग्स से हटा करके बच्चों को वो गंदी आदतों से हटा करके तालीम के ऊपर देना है ध्यान इनका। कुरान शरीफ में सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई वो इक़रा थी, पढ़ो। हम भूल गए, दूसरे उसको अडॉप्ट कर लिया। जो जो उसको अडॉप्ट किया है वो तरक्की कर रहा है। अब इस तरह से अभी खुशी भी चली गई, हम भी चले गए। इसी तरह देखते ही देखते एक साल भी चला गया। जिंदगी एक दीवार की तरह है। अब उसके अंदर से एक ईंट गिर गई। हर साल एक ईंट गिरती है और हम कमज़ोर हो रहे हैं। हम जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे पीछे लोग हैं, जो बच्चे हैं, फ्यूचर जनरेशन है, उनको हम कहाँ खड़ा कर रहे हैं। आज का जो इवेंट है जी, स्टूडेंट से हटकर कोई नई चीज पेश करने की कोशिश की है, जहां पर टीचर्स को बुलाकर उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है। जी। तो इस चीज में आपका क्या कहना है? जब तक आप कोई भी चीज़ को, किसी को भी मोटिवेट जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो मोटिवेट हो करके उनके अंदर की एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये जो कर रहे हैं टीचर्स को, एकेडमिशियंस को जो बुला करके इनको जो मोटिवेट किया जा रहा है अवार्ड सेरेमनी के ज़रिए से, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। अब इस तरह से हर कॉलेज में, हर इदारे में टीचर्स को मोटिवेट करेंगे तो मोटिवेटेड हो के जो उनका रिजल्ट निकलेगा, द एंड रिजल्ट, जो बच्चों को जो रिजल्ट जाएगा, दे विल ऑल्सो बी अ मोटिवेटेड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन। नॉलेज इज देयर एवरीवेयर। सबसे ज़्यादा नॉलेज गूगल के पास है, एट योर फिंगर टिप्स। कोई भी चीज़ पूछो गूगल आपको दे देगा। लेकिन क्या गूगल एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा? और मैं चाहता हूँ कि और इदारे भी इसको, इस स्टाइल को, इस परफॉर्मा को इस्तेमाल करके अपने अपने इदारों में, एटलीस्ट कम से कम अपने अपने कॉलेजेस में, अपने अपने स्कूल्स में उनकी अपनी स्टाफ को मोटिवेट कर। हेड होने के नाते हर एक उनको डांटते ज़रूर हैं, पढ़ाने वालों को, ये ठीक नहीं किए, वो ठीक नहीं किए। उसके बजाय एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेंगे तो उनका भी माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा और बच्चों को भी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे इंशाल्लाह। का नाम इनायतुल्लाह। Assalamu alaikum everyone. Alhamdulillah, today's program is where Sophia PU Academy has appreciated their teachers and all the other teachers of other institutions and colleges and schools as well. So we usually see that it's only students being appreciated everywhere. It's only one Teachers' Day that we think about the teachers and we appreciate the teachers. But imagine the amount of dedication and the pain and what not that the teachers go through, because teachers are like second mothers to the students. The amount that they teach the students and the amount of patience and efforts that they put in, it is really commendable. So I really want to congratulate Sophia PU School and University, School and College for appreciating the teachers. It was a very good initiative that they have taken, and thank you so much for inviting me as a guest of honor. And it's really good that this program has taken place, and I wish them many more. Thank you. जी, आज प्रोग्राम्स को इनवाइट किया था मेरा मैडम, और यहाँ आकर देखकर ऐसा हमने महसूस हुआ कि हर जगह एक पत्थर को लेकर तराश है तो डायमंड बनता है। डायमंड की कदर पूरी दुनिया को मालूम। वो डायमंड की तराशने का काम टीचर्स करती हैं, जो भी स्टूडेंट्स को लाकर उनको हुनर से नवाजने का काम पूरे टीचर्स करती हैं। और टीचर्स को इग्नोर करा लेती। पेरेंट्स, ये स्टूडेंट जो भी उनको स्पोर्ट्स में रहते, ड्रामा में होंगे, डांस में रहते, उनको अवार्ड्स कहते प्राइज़ देती। ये टीचर्स को लाखों यहाँ अवार्ड्स देने का काम बहुत ही बड़ा काम। ऐसा बेंगलुरु में बहुत जगह करना, जो टीचर्स को जो अवार्ड्स दे रही उनको और भी दिलचस्पी आ कि स्टूडेंट्स को और आगे लेके जाना पड़ता है। ऑर्गेनाइजर्स की सपोर्टिंग के लिए बहुत कम इदारे आगे बढ़ते हैं। बहुत कम।
आज मुझे खुद एहसास हुआ कि ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे टीचर्स, अकाडमी को हमें हर तरह से सपोर्ट्स भी करना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मैडम जी का और पीओडी का। मेरा नाम यार खुमैनी यासीन, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। My name is Amira. I'm the founder of Sophia PU Academy. It is under Equality for All Trust. We are really working for the students who really wants to do business or achieve some good designation. So today we have exhibition over here where they have made their own products, and after making the products, they are selling the products over here. The main motive for this program is, the program name is Educators Honor Gala. We all know how important our teachers are. They are similar like parents. So today we are identifying some of the very good teachers, educators, principal, and giving the identification to them. So we could also feel proudly that yes, they are contributing a lot to the society, and their contribution need to be identified. Thank you so much. We had actually 1200 nominees, but today 150 people have come here to get the award. What about the reactions? Yeah, you can see the people and the public, they are really happy and they are appreciating that yes, teachers should get their identification. So teachers को literally identification की ज़रूरत पड़ती है। उनको मालूम होना कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट करी सोसाइटी को। एक बच्चे, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक उनको पढ़ाती, उनका टाइम देती, उनका वक्त देती, तो आज हमें उनको अवार्ड दे रही। सो इट कैन बी जस्टिफाइड टू देम। एज वी से, गुरु इज लाइक अ पेरेंट। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है प्रोग्राम, या फ्यूचर में क्या प्लान है? ये अभी तो हमने शुरू किया है, ये फर्स्ट टाइम है। इंशाल्लाह वी आर लुकिंग आउट फॉर अ गुड इवेंट्स इन फ्यूचर। ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸೋಫಿಯಾ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ನಾವು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಉದ್ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ ಫುಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಹದ್ದರನ್ನು ಅಥವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರಂಥವರನ್ನು ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಪದಂತ. ಏನಾಗಿದೆ? ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ನ್ಯೂ ಬಳ್ವಿನ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ರೇರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋಫಿಯಾ ಕಾಲೇಜು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದು ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. It is a wonderful evening. So they have recognized the Guru's services to the society. It's very, very important that a teacher is a very, very important milestone step. They have to actually guide the students. So Sophia College, it's a very good initiative they have taken. So I congratulate all the lecturers, and it is a grand success. It's not only for a single teacher, they have welcomed all the faculty members from various institutions. It's a recognition for their service. I heartily congratulate the management and all the lecturers who have given their wonderful service to the society. And he's our HOD, Mr. Rakim sir, who is continuously guiding. He's also an inspiration for institution. And they say, there is a saying,
coordination is the essence of management. Like that, sir is a great example for the coordination. So sir is also, I feel very proud to be with our HOD and in this great event. Thanks for this opportunity given to me to speak on this occasion. Thank you. Very much thankful for Sophia PU College and Academy for giving me the Teacher's Best Award. Thank you very much. Myself, Fahira Kausar. I am from Al-Arfa International School, and I thanks Sophia College for giving this award. And it's all because of my HOD, Khairunisa ma'am. From her I got to know about this college, and thank you so much. I am the HOD and the IQC coordinator of the National Arts, Commerce and Science Degree College. I am very much thankful for the Sophia College for providing me such a biggest trophy. This is my biggest achievement. So I pray for the Almighty, so henceforth I will be receiving the more award, and thank you so much for this. Myself, Bushra Taslim. I am working for KGI now. I am pursuing my PhD. Thank you so much for Sophia PU Academy for handovering this award for us. I really appreciate it and looking forward to work with this institution in the future. Thank you so much. My name is Javeria Naz Naushin. I belong to GRV Business Management Academy, and I teach English for communication skills and all. And here they have recognized our talents, and based upon the voting, they have selected the best teacher. And I'm glad that we all have got so much of influence on our children. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे यहाँ पे अप्रिसिएशन का अवार्ड, इनोवेटिव टीचर का अवार्ड मिला है, एंड वी थैंक्स फॉर सोफिया PU कॉलेज दैट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ innovations and organizations. We are really grateful and thank you for that. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रहमत जान है और मैं बेंगलुरु स्कॉटिश स्कूल की टीचर हूँ। यहाँ पे अवार्ड मुझे बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर, बेस्ट ईयर ऑफ द टीचर का अवार्ड मिला है। At the outset, I would like to thank Sophia's management for honoring all the educators. It's a very unique way where unsung heroes and heroines have been honored. Like this, many institutions should come forward to praise and appreciate the efforts given by the educators who mold the futures of India. So once again, thank you for giving me an opportunity and honoring me. Thank you. Your name? I am Professor Nicholas, Principal of Deccan Group of Institutions. Thank you. Today indeed is an honor to receive this award. I wholeheartedly thank Sophia Academy for this award. Thank you. आप कहाँ से आए हैं? कौन से स्कूल से आप? Myself Aisha, I am from Florence English School, Subanapai. तो आपको आज अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला? For the best teacher award. My name is Naveen Anjum from Naz Edu Talent School. I'll be thanked for this taking award because of our special award will be issued for respected principal ma'am, our Nazia ma'am, because of this success. तो आपको भी अवार्ड मिला था, तो आप कौन से स्कूल से? I am from Naz Edu Talent School. Yeah, I am literally. It's a privilege that we got an opportunity to come and speak here. It's all because the students and my parents, I'm standing over here and speaking to you people. It's only because of them, and really thankful for the Sophia School that they awarded us as the best outstanding principal of this year. Thanks.